It is an honor for me to be called for this most important event. अभी हम लोग थोड़ा मजाक कर रहे थे, इंग्रिड के साथ मैं बात कर रही थी कि वादा ना तोड़ो अभियान तो हमारा नाम है, लेकिन पिछले 4 सालों में कई चीज़ों में हमें लगता है कि जो वादा करके आए थे वही पूरा कर रहे हैं. इट वॉज़ क्वाइट क्लियर. जो मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था, जो इनका एक बहुत ही डिवाइसिव कम्युनल एजेंडा था, उसको तो ये हर हालत में पूरा कर रहे हैं. बाकी चीज़ें जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे कि हम बहुत बड़ी बूमिंग इकोनॉमी हो जाएगी हमारी, और उसमें क्या फैक्टर्स हैं, क्या डेटा अवेलेबल है, डेटा ही अवेलेबल नहीं है, कैसे लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे इन क्लेम्स को. लोगों की पीठ टूट रही है. पीपल आर फेसिंग बैक ब्रेकिंग conditions in terms of inflation and unemployment and impoverishment, destitution, hunger. ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये बहुत सारी promises की गई, और खैर विदेश में जाके तो बहुत और promises होती हैं. When he goes to the G20 or he goes anywhere abroad, to the US or anywhere else, he says that we are the mother of all democracies. तो वो जो claim है about being a mother of all democracies, which एक भी press conference में कोई उसको validate नहीं कर पाते हैं, you find that, our experience has been completely different. So, what he promised domestically and what he's saying outside, उसमें भी फ़र्क है, and what the claims are and what is happening in the last 4 years, in fact, last 9 years, is very different, and the speakers will place these issues before you. Of course, the report is there for all of you to see, and I will just briefly introduce Ingrid, who will be our first speaker. Ingrid Srinath is an expert on philanthropy and civil society. She has been a passionate advocate of human rights, social justice, and civil society in India and around the world for over the past 2 decades. She has headed and worked with several globally recognized rights-based institutions in the course of her illustrated career. इन्होंने मानव अधिकार के क्षेत्र में और बहुत काम किया है, हिंदुस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड हैं ये. हाल में ये अशोका में भी पढ़ा रही थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया है. मैं वेलकम करूँगी इंग्रिड को कि वो आके अपनी बात आपके सामने रखें. Would you like to come here? Yeah. Thank you, Nandita. Thank you, Vada Na Toda Abhiyan, for inviting me. Thank you also, compliments on putting together a really excellent report. I will apologize that I will speak only in English because, well, I don't want you to laugh too much, basically. In the section on democracy, in the report, we've said that is this period of 4 years, 2019 to 2023, have we faced the greatest threat to our democracy than we have ever faced in 75 years of independence? That is the hypothesis that we're offering. And it's quite a big claim to make because obviously we've had the emergency in 75, 76. There have been other threats at different points in time. But when you look at the last 4 years, in terms of the scale of the threat, the comprehensiveness of the threat, the way institutions across the spectrum have been either discredited or infiltrated or hostile takeovers, then it's almost impossible not to conclude that we are in fact going through right now the greatest threat to democracy and civil society than we have faced in 75 years. If we start in 2019, coming back on this great mandate that they had, they immediately started to fulfill the promises that they had made to their base. So we saw immediately Article 370 being abrogated. We saw the Citizenship Amendment Act. And then we saw the response from our government to the protests that followed. The virulence of that response, the fact that they were willing to literally throw people in jail and throw away the key without ever bringing them to trial, without formally charging them, the intimidation, the threats, the violence
that they were willing to unleash against protesters or any form of dissent anywhere, I think is close to unprecedented. I mean, maybe the emergency was the only time that we've seen this kind of hostile response to the government. So across our basic democratic freedoms, whether it's freedom of expression or freedom of association or freedom of assembly, which are the three areas that civil society in many ways focuses on, we've seen this comprehensive assault. And nobody has been spared. Whether you're a student, an activist, an academic, a journalist, an artist, a performer, a comedian, a fact checker, a publisher, across the board, a union leader, across the board, we have seen people being charged under these draconian laws, whether it's UAPA or PMLA or Section 124A, all of which permit the government the latitude to literally make the process the punishment. They never need to prove you guilty of anything. They can literally put you in jail for a decade without ever having to prove that you've committed any crime. What this has had the effect of doing is not just targeting the people in the front line, but also having what's called a chilling effect on everybody else. So whether it's in academics, where Professor and I come from, and most recently, where we've seen this complete shrinking of space for academic freedom, or for students to express themselves, or whether you look at the media, the mass media, whether you look at even the online media now, whether you look at philanthropy, whether you look at big business, everybody has to either toe the line and become a cheerleader of the government or face the consequences. And the consequences are both relentless and ruthless. There is nothing that is out of bounds. Your family, your reputation, your finances, your data, your everything is up for grabs when they come after you. And they're now deploying some of the most sophisticated technology tools to achieve these goals. So whether this is surveillance, or whether, as is alleged, planting evidence even on your device. Amitabh has experienced this firsthand of having people survey his organization and clone all their devices without any charges being presented, without any warrant being presented, without any justification at all for taking this data and these devices. And of course, the most severe consequences are reserved for religious minorities, for Muslims and Christians in particular, but others, for CSOs and journalists in Kashmir, for example, and for members of scheduled castes and scheduled tribes and people in the Northeast. So what we're seeing is this majoritarianism combined with crony capitalism in an unholy alliance that sees every form of dissent as an obstacle to their goals. You're seeing rank impunity when it comes to civil society or minorities or underprivileged communities being seen as fair game. Anyone can do anything to us. It doesn't matter. Nobody will face any consequences. There's selective suppression of social media accounts through takedown orders and threats. Social media companies themselves are under threat. There are these offline and online armies of trolls who will come after, again, everything, your reputation, who you are, morphed pictures, you name it. And there's a particular brand of vitriol which is reserved for Muslims, Dalits, and women. And if you happen to sit at the intersection of those identities, then of course you are target number one. I'll focus a little bit on the state response to COVID. I don't think anyone in this room needs any reminder of how systematically our state failed to deliver the services that people needed at that time, and how civil society was the one that stepped up. But if you take a step back, look at how other governments responded to COVID. In countries even like China and Russia, governments responded by offering 100% tax exemption to NGOs, to say, this is a time of emergency, we need NGOs to respond, and so we must facilitate their ability to respond. In our country, on the other hand, one, the Prime Minister set himself up as our biggest competitor.
So 11,000 crores of money that could have come to civil society instead went to PM Cares, where it has disappeared into a black hole, and we will never find out what happened, because PM Cares is a public authority when it raises money, but it's a private authority when it comes to accountability. Then in addition to that, we got new FCRA amendments during COVID. We got new IT rules. We got new CSR rules, just to make our life even more difficult than it already was. We should, I think, focus a little bit on how these laws are being passed. If you look at parliamentary processes, systematic erosion of debate, of committees, of the process of scrutiny of legislation before it gets passed. The FCRA amendments are actually a good case in point. 72 hours between the time the bill was first presented in the Lok Sabha to the time the president gave his assent. Nobody at any stage had the opportunity to even read the amendments in their entirety before voting on them. No debate of any kind happened, or very few. Supriya Sule stood up and said a few words. Somebody else stood up and said a few words. But the idea that you can pass draconian legislation in 72 hours without any debate of any kind speaks to where our parliament is. The last piece really is around data. You made a mention of it. We are seeing the systematic suppression of data, which is seen as hostile. So even something like the rate of anemia among Indian women is now seen as a national threat. So the person who publishes this data was first accused of, well, first they tried to suppress the data, then they accused him of crimes and misdemeanors, and finally he has been intimidated into stepping down. We have no sign of when we will have a census, or if we will have a census, or what form that census will take. Consumer expenditure survey, national sample survey, family health survey, periodic labor force survey, caste census are all up in the air. We have no idea when we're going to see this data, which really makes it impossible to even hold the government to account. If I have no data, how do I establish whether a policy is working, how it's being implemented, who it's reaching, who it's not reaching? And so we have these contradictory things. Our national poverty estimates currently range from 1% or 2%, according to Surjit Bhalla, to 20%. Now, depending on which number you choose to believe, that's either a handful of 1 million people or it's 150 million people. 80% of the population apparently needs a subsidy. So how do we square this data? That on the one side, economists who are favorable to the government say that less than 2% of India is poor. On the other hand, the government itself says that 80% of the population needs a subsidy. And any international data is also sought to be discredited. So as soon as the data is unfriendly, if it's, ease of doing business, then we do really well and we compliment the World Bank on having an excellent methodology and etc. Their own statisticians have, of course, debunked that methodology. But anyone that is critical is either motivated, or their methodology is unsound, or they have some kind of anti-national agenda. The gaps then in the delivery of COVID gave us an opportunity to reinvent social protection in our country. And countries that took those lessons have benefited tremendously. If you look at the surge in racial equity funding and racial equity programming in other countries, based on the experience during COVID, you will see a very different story from the one that we see here. We have decided that these gaps are going to be filled by private philanthropy. And private philanthropy will focus only on filling those gaps. You're allowed to distribute food. You're allowed to run parallel services to the government, or even subcontract yourself to deliver government services. But if you ask the question, why are these services not available? And why are they being left to the private sector? Then, of course, you're an anti-national and you can no longer operate. Indian donors have chosen to fall in line. There are very, very few donors. I don't even need the fingers of one hand to count the donors who are still willing to fund work that is in any way systems related, structural change related, root causes related, rights-based related. And so this idea of what is the role of civil society itself has been undermined. So civil society is being sought to be reduced to a provider of low-cost, last-mile services
that substitute for gaps in public service delivery rather than its entire complement of roles, which is as a watchdog, as an advocate, as a convener, as a public accountability agent, as the whole range of roles that we're supposed to play. The most important, I think, impact of the last 4 years has been on the narrative. Rather than recognizing the value of civil society in getting citizens more engaged, in getting citizens involved in improving and delivering better and more responsive public services, empowering communities, upholding rights and freedoms, the narrative that they have very successfully created about all of us, whether we are trade unions or whether we are NGOs or whether we are anything in between, is this is a group of people who is ineffective, they're inefficient, they're mainly corrupt, and they're possibly anti-national. That is the narrative that is now a commonly held belief among people. I was talking to Amitabh earlier, I was getting my hair cut, and an old Parsi lady who was there at that time. The Parsis are among the most philanthropic, most generous communities in our country. This old Parsi lady asked me, she said, "Is it true, Ingrid, that they're all anti-national?" And I said, if we have lost the old Parsi ladies, then we have lost everybody. That has been the success that they've had. There is in a book that Samruddh Bharat Foundation has just published on rethinking India, Pushparaj Deshpande, in his opening essay, describes a concept called Gleichschaltung, which is from the Nazi period in Germany. Gleichschaltung literally translates as consolidation. And it is described as follows. All the German social, political, and cultural organizations had to be controlled and run according to Nazi ideology and policy. All opposition had to be eliminated. Every national voluntary association, every local club was brought under Nazi control, from industrial and agricultural pressure groups to sports associations, football clubs, women's organizations. In short, the whole fabric of association life was Nazified. Existing leaders of voluntary associations were either ousted or knuckled under of their own accord. Many organizations expelled their leftist or liberal members and declared their allegiance to the new state. By the end, virtually the only non-Nazi associations left were the army and the churches. I have not seen a better description of what we are going through right now than this concept of Gleichschaltung. Is there hope? There's always hope, first of all. I think if you're in civil society, we are just trained, born optimists. I think we need to first set aside our differences. I think we spend too much time niggling over small differences of ideology or small differences of stance. We need to recognize that the threat we face is a once-in-a-lifetime threat, and we need to get together. And so getting solidarity across the sector, shaping the narrative proactively so that we are putting out the narrative about who we are, what our value to society is, and why we should be supported. I think there's interesting comparisons from what's happening with Indian organizations overseas. I mean, I was truly impressed by the coalition that has been built in the US, for example, between Dalit organizations, Muslim organizations, Hindus against Hindutva, leftist organizations have come together to overtly fight this threat. If they can do it there, we should be able to do it here. I think we need to go back to our public. Take FCRA and the rest of it as an opportunity rather than as a threat, and say this is our opportunity to raise resources and mobilize our own communities rather than being dependent on institutional donors. And finally, we really need to look at the infrastructure of our sector. We have failed to build strong, sustainable sector networks that are able to raise our voice, able to shape this narrative, able to collect data on our behalf, and able to disseminate it. So that's where I'm taking hope, mainly because I think I have more faith in Indian people than in our politicians or our business people or our philanthropists. And I think it's time for us to go back to those people, to seek our mandate with our promises, which we know we can deliver. Thank you.
थैंक यू सो मच इंग्रिड। इंग्रिड ने जो अभी हमारे सामने ख़तरा है वो पेश किया आपके सामने कि इससे बड़ा ख़तरा जो आज के ज़माने में है वो हमने कभी भी फेस नहीं किया था, इमरजेंसी तक में नहीं किया था। इमरजेंसी में काफ़ी हद तक हमारी लिबर्टी चली गई थी, लेकिन यूनिटी फ्रेटर्निटी पूरी तरह से नहीं गई थी। और अभी जो स्केल है इस खतरे का, ये बहुत ज़्यादा मतलब अनपैरेलल्ड है हमारे इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में। जिस तरह से हर प्रोटेस्ट को क्रश किया जा रहा है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक चिलिंग इफेक्ट इसका होता है कि कुछ लोगों के साथ ये किया जाता है, बाकी लोग चुप हो जाते हैं, तो एक सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है। आप आगे बढ़ के वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं ऐसे पोस्ट को, ये आपका हाल हो जाता है। और जो सर्वेलेंस की इनकी टेक्नोलॉजी है, पेगासस जैसे फॉर एग्जांपल, और वो किस तरह से उन्होंने इजरायली इंटेलिजेंस वगैरह का भी यूज़ करके किया है, तभी तो इतनी क्लोजनेस है उनके साथ, बहुत कुछ वहाँ से उन्होंने लिया है। जो माइनॉरिटीज़ कश्मीरी SC ST और नॉर्थ ईस्ट के साथ हो रहा है वो हमारे सामने हैं। तो इस तरह से जो सिलेक्टिव सप्रेशन चल रहा है और एक ऑनलाइन आर्मी ऑफ ट्रोल्स इनकी तैयार है, और इनके पास जो इतना पैसा है उसकी वजह से किस तरह से ये पूरे नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, नॉट ओनली मेन स्ट्रीम मीडिया बट इवन वो सारा जो सोशल मीडिया है उसको भी एक काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और भी इनके जो ज़रिए हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। इंग्रिड ने बताया कि FCRA का कानून फॉर एग्जांपल 72 घंटे के अंदर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पूरा पास हो गया, कोई डिबेट नहीं, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेटा सारा सप्रेस किया जा रहा है, ज़रा सा भी अगर सरकार को क्रिटिकल लाइट में दिखाता है तो वो छिपा दिया जाता है। अगर कोई ऑफिशियल्स अपना काम करके डेटा को आगे ला रहे हैं, एनीमिया जैसे बीमारी के लिए, उनको भी फिर अपने पोजीशन से हटा दिया जाता है, उनको या तो डिमोनाइज कर दिया जाता है। इसी तरह से ये जो एस्टिमेट्स हैं हमारी नेशनल पॉवर्टी के, जो सरकार के करीब लोग हैं वो 1% बता रहे हैं, और बाकी एस्टिमेट जो है हिंदुस्तान में बाहर भी 20% तक जा रहा है, तो किसको बिलीव किया जाए। इंटरनेशनल डेटा भी जो आ रहा है सामने उसको भी ये साइडलाइन कर देते हैं कि या तो वो लोग एंटी इंडिया हैं या वो उनके मेथड एकदम गड़बड़ हैं। इस तरह से कोविड के बाद भी जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी कि हम सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम को, हेल्थ को रीहैश करेंगे, वो हमने इस्तेमाल उसका नहीं किया। हम उसको और ज़्यादा प्राइवेटाइज कर रहे हैं और बजट कम कर रहे हैं और उसको प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जा रहा है। और सिविल सोसाइटी का जो रोल है हर जगह ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ सिविल सोसाइटी जो बच गए हैं, जिनके ऊपर FCRA से पूरा गला नहीं घोट दिया गया, और भी तरीके से गला नहीं घोट दिया गया, जो बचे हुए हैं वो भी बिल्कुल लास्ट लैप में जाके बस आप सर्विस प्रोवाइडर हो जाओ, आप डिलीवर कर दो गुड्स को। लेकिन उसका जो दूसरा रोल था वॉच डॉग वाला और फीडबैक वाला और पॉलिसी को क्वेश्चन करने वाला, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं जैसे मैंने बताया। और एक समृद्ध भारत के आर्टिकल को कोट किया इन्होंने, जिन्होंने बताया उसमें कि जो अभी हो रहा है कि किस तरह से हर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन या फॉरम को ख़त्म करके पूरा उसका नैट्सिफिकेशन करके अब जो टेक ओवर पूरा हो जाएगा, वो एग्जैक्ट पैरेलल है नाज़ी जर्मनी में जो हो रहा था, वो अभी हिंदुस्तान में चल रहा है। और एक उम्मीद की किरण भी रखी लास्ट में कि जिस तरह से और जगह भी जहाँ पे स्ट्रगल्स चल रही हैं, US में भी काफ़ी अब देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन के मामले के बाद किस तरह से वहाँ पे रिप्रेशन एकदम से सामने आ गया, पूरा लिबरल मास्क उतर गया है, लेकिन वहाँ पे सिविल सोसाइटी कैसे लड़ रही है, और दलित हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, लेफ्टिस्ट ग्रुप्स, दलित ग्रुप्स, ये सब मिल के लड़ रहे हैं। तो इस तरह के कोएलिशंस हमें अपने यहाँ भी इस्टेब्लिश करने हैं, आपस के जो मतभेद हैं उनको भुलाकर। यही चीज़ है जिसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें, यही एक रास्ता है आगे के लिए। तो आई विल जस्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर। द नेक्स्ट स्पीकर ऑन आवर पैनल इज डॉक्टर दीपा सिन्हा. Deepa is an economist and faculty member at Ambedkar University. She has also been associated with various civic and public campaigns on the right to food, nutrition, public health, and gender equality, while also being part of official committees developing narrative and policies on these issues. Deepa, please come. धन्यवाद. Thank you, Vadana Todo, for thinking of me on these occasions.
क्योंकि यहाँ पे आके बहुत सारे दोस्तों से भी मिलने का मौका मिलता है, विच वी नॉर्मली डोंट डू। आजकल ये जूम के ज़माने में सब अपना वीडियो ऑफ करके हम लोग मीटिंगों में बैठे रहते हैं, सो दैट्स वन एटलीस्ट फन पार्ट ऑफ कमिंग ईयर। Whereas the second part is, of course, हम लोग अपना रोना भी रोते हैं हर कुछ महीनों में. But like Ingrid, I would say right at the beginning, I don't think it is hopeless. I think this exercise is useful for us to keep reviewing what we are doing and how we can do it better so that this resistance can be stronger and seen beyond our own echo chambers. मुझे बोला गया है डेवलपमेंट पे बोलने के लिए. आई वोंट गो इनटू ईच ऑफ द सब सेक्टर्स. रिपोर्ट में काफ़ी कुछ लिखा गया है एंड वी ऑल नो इट. आप लोग सब ज़मीन पे काम करते हैं, हम जानते हैं कि लोगों के ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कि गरीबी अभी भी है. गरीबी से भी बढ़कर जो दिखता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, which is very clearly visible across the country, where you have increasing number of youth who have gone to school, many who have gone to college, but are not getting work, are not getting employment which is paying them enough to live a dignified life. And I think the big difference, or the change that has happened in the last 10 years, is that employment has become in some ways a private issue. अगर हम इस 10 साल से पहले के 10 साल के बारे में सोचे, अखबार में रोज़ रोज़ न्यूज़ आता था जॉबलेस ग्रोथ की सरकार क्या कर रही है. एक तरफ ग्रोथ हो रही है लेकिन दूसरे तरफ एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है. अभी वो हम नहीं देखते हैं, उस तरह की चर्चा हम नहीं देखते हैं, ना ही जनता से उस तरह का मांग देखते हैं कि अगर हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है तो इसमें सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है. आई थिंक दैट इज़ द बिग चैलेंज ऑन एम्प्लॉयमेंट. ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ नॉट क्रिएटिंग इनफ जॉब्स इज समथिंग दैट इज़ ग्लोबल एंड इट raises questions on the larger development model itself, कि ये किस तरह का वृद्धि है, आर्थिक वृद्धि, जिसमें रोज़गार नहीं क्रिएट हो रहा है. कि हम जीडीपी को देखें, हम इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, दुनिया में सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगी. ये जो सेपरेट कर दिया है हमने ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को, ये बहुत सालों से चल रहा है. लेकिन अभी के इस सरकार के दौरान इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि रोज़गार अगर नहीं हो रहा है तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है. सरकार बेचारा क्या करेगा इस पर. सरकार 10 किलो अनाज दे देगी, 5 किलो अनाज दे देगी, कुछ लोगों का घर बनवा देगी या कुछ और करेगी, जो सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी भी है. दे डिडंट कम आउट ऑफ द स्काई, दे डिडंट कम आउट ऑफ द ब्रेन्स ऑफ अ पर्टिकुलर पोलिटिकल पार्टी. दे केम आउट ऑफ द स्ट्रगल्स of which many of us in this room were also part of. But to take claim of these kind of individualized benefits, while at the same time, आपने कहा creating narratives, I don't think any of us are anywhere in creating narratives on development, but ये जो narrative है कि डेवलपमेंट मतलब क्या है, मुझे लगता है उस पर और हम लोगों को समझ बनाने की ज़रूरत है, नॉट जस्ट हमारे लिए, पर इस चीज़ को हम कैसे लोगों के बीच में ले जाएंगे. सोशल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हम लोग बार बार बोलते रहें, दो चीज़ें हम लोग मेनली देखते हैं. पहला, जैसे मैंने कहा, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना, सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना. राइट नाउ दैट इज़ नॉट ऑन द एजेंडा. द एजेंडा इज़ टू हैव सम विजिबल schemes where some transfers are made to people. That is also often not made in a dignified manner. यही सरकार एक तरफ 5 किलो अनाज देती है, कहीं पे मुफ्त में कुछ और देती है, और इसी सरकार के लोग बार बार रेवड़ी करके लोगों का इंसल्ट भी करते रहती है. So on the one side, we see that the whole way in which the social sector is visualized is moved away from, we had right to education, there was a conversation on right to health, national health mission, village health plans, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है. कुछ स्कीमें ज़रूर चल रही हैं. ऑन दी अदर हैंड, वॉट वी सी ज़ोरों शोरों से जो चल रहा है वो निजीकरण, जिसकी बात अभी हुई. और निजीकरण में भी पहले की सरकार भी निजीकरण कर रही थी, लेकिन उसमें भी अभी बहुत इनोवेटिव निजीकरण भी है. एक है कि डायरेक्टली आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो सरकार खर्च नहीं कर रही है तो प्राइवेट हॉस्पिटल बन रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है. दूसरा है कि सरकार अपने ही स्कीम में जगह बना रही है प्राइवेट सेक्टर के लिए. जैसे अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें, स्वास्थ्य में अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस पर है? आयुष्मान भारत, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो सरकार खर्च करेगी, सरकार प्रीमियम भरेगी,
लेकिन लोग जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, पैकेजेस मिलेंगी प्राइवेट हॉस्पिटल को। आप एजुकेशन में भी देख लीजिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उनके लिए हम फ्री में ज़मीन देंगे, उनको सब कुछ आसान कर देंगे कि वो खोल सकते हैं, जितना मन करे उतना फीस ले सकते हैं बच्चों से, लेकिन सरकार के नाम पे ये चल रहा है। या डिजिटल एजुकेशन, गवर्नमेंट्स विल पार्टनर विद बायजूस एंड वेदांता एंड whoever else, but basically that the government itself, in the name of development, in the name of helping the poor, the way it is creating more and more spaces for the private sector to make more and more profits. I think this has been there, but that has seen a huge increase in the last 10 years. And the political economy of that is something to be studied. The whole recovery is happening not by increasing the incomes of the poor, but by increasing the profits of the corporates, not just in the traditional corporate sectors, but also in education, in health, which we would understand as areas that the government should be providing as a matter of right to all its citizens. Two more things I wanted to talk about in this context of this broad overview of development. One that Ingrid did make a mention to, which is related to the issue of data. हमें लगता है कि क्या है डेटा, डेटा डेटा, अर्थशास्त्री लोग डेटा करते रहते हैं, जर्नलिस्ट लोग डेटा करते रहते हैं, आजकल हम सब लोग डेटा डेटा कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ ह्यूज इश्यू कि अगर कुछ आंकड़े ही नहीं हैं और हमारा जितना बड़ा देश है उसमें सरकार अगर आंकड़े नहीं कलेक्ट कर रही है और जो कर रही है उसको बाहर नहीं दे रही है, तो कोई भी किसी भी अधिकार से नहीं बोल सकते हैं कि ये हो रहा है। हम कुछ भी कर लें, कितने भी सर्वे कर लें, हमसे बोला जाएगा कि आप जिनसे संपर्क में हैं आपने उनसे बात की। इससे हम कैसे बोल सकते हैं कि पूरे देश में ये चल रहा है? चुनाव तो कौन जीत रहा है? जिसकी सरकार है वही लोग तो चुनाव जीत रहे हैं, तो आप लोग को कैसे हम माने? पर ये बहुत बड़ी, आई थिंक जो राजनीति डेटा पे खेली जा रही है वो भी दो स्तर पे है। एक स्तर है कि डेटा ही नहीं कलेक्ट करें, जैसे सेंसस होना ही नहीं है। दूसरा है कि जब डेटा कलेक्ट करके हमें अच्छा नहीं लग रहा है जो डेटा से निकल रहा है, तो हम डेफिनेशंस ही बदल दें। जैसे अनीमिया पे अभी चर्चा चल रहा है कि जो अनीमिया का कट ऑफ है, द लेवल एट विच अनीमिया कट ऑफ, हीमोग्लोबिन कट ऑफ इज कंसिडर्ड अनीमिया. Now there's a discussion that Indians are different in some manner and therefore that cutoff has to be changed. There is a whole discussion where the PM Economic Advisory Council people have written at least 5 articles over the last 6 months, जहाँ पे कह रहे हैं कि कुपोषण की जो आंकड़ा है, that the figure on stunting and wasting that we get, that is also not applicable for Indian children, क्योंकि भारतीय बच्चे कुछ अलग ही हैं। तो पूरा विश्व में 180 देशों में जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अलग हैं। गरीबी अगेन सालों से चला आ रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, उससे हम पता लगाते हैं कि लोग अलग अलग चीज़ों पे कितना खर्च कर रहे हैं। फिर हम डिफाइन करते हैं कि जो कुछ मात्रा से कम लोग खर्च कर रहे हैं वो गरीब है, और उस पर हम लड़ते थे कि वो लाइन को ऊपर करना चाहिए, नीचे करना चाहिए। अब लाइन ही नहीं है, अब हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं। वी नाउ हैव अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर, विच एक्चुअली was a very progressive idea, but again has been twisted in a manner जिसमें सरकार कभी गलत नहीं दिख सकती है, क्योंकि MDPI में क्या है कि कितने लोगों के पास टॉयलेट है, कितने लोगों के पास घर है वगैरह, जो इस शॉर्ट टर्म चेंजेस में दिखता नहीं है कि वो घट गया, और दूसरा जुड़ा हुआ है जो सरकार के स्कीमें हैं उसी से, और उनके क्या डेटा है वो भी हम जानते हैं। तो fudging the definitions, not just fudging the data, but fudging the concepts itself in a way that you will get what you want. The third way in which I think the social sector, and this is where I'll come towards my concluding and towards the end, is the whole communalization of development. And I think we have to really bell the cat here and name it and recognize it. One is privatization, but the other is through this also, this agenda of this Akhand Bharat kind of vision. To give the latest example, कुछ लोगों ने देखा होगा, there is a recent notification which says that all health and wellness centers should be called आयुष्मान आरोग्य मंदिर, and इस पर बोर्ड लगाना चाहिए आरोग्यम परमम धर्मम, समथिंग टू दैट इफेक्ट। एक तो साउथ इंडियंस को तो ये लोग मानते ही नहीं है, इंडियंस आधे चीज़ें हमें समझ नहीं आती, जो जैसे नए कानून आए हैं उनके भी नाम जैसे हैं लंबे लंबे। But that this is a government program a universal program which is providing all health services
Again, the idea of health and wellness center is very progressive. It's something that health movements have been demanding since the 70s, that there has to be comprehensive primary health care available in the village. Now you're saying, okay, we'll do that. But one of the first things you do is not to fill the vacancies there, not to have qualified community medical officers, nurses, ANMs and so on. But इसमें budget भी है. ये पूरे सारे राज्यों में गया है कि इतना करोड़ आपको दिया जाएगा, तुरंत आप हर जगह बोर्ड पहले लगवा दें कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और मंदिर में लोग आ रहे हैं अपना चिकित्सा करवाने. सो दिस होल थिंग ऑफ हम भले ही अलग अलग सोचे कि इंग्रिड डेमोक्रेसी पे काम करती है, मैं डेवलपमेंट पे काम करती हूँ, कोई और किसी और चीज़ पे काम करते हैं, सरकार ऐसे नहीं सोच रही है. अभी जो राजनीतिक माहौल है, जो मेन पॉलिटिकल फोर्स है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा है. उनका एक विजन है और वो सब कुछ एक साथ सोच के साथ बहुत ही अच्छे से करते हैं. मुझे लगता है कि उनसे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम बार बार बोलते हैं. मैं पिछले बार, मुझे याद है, वो दूसरे वाले हॉल में हुआ था, तब भी आके हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये अब नहीं चलेगा कि डेमोक्रेसी वाले अलग और डेवलपमेंट वाले अलग. इसको जुड़कर ही हमें देखना पड़ेगा. अदरवाइज देर इज, while there is a hope, this is where I see the hope, that we bring it together. And that's where on development, that's why I don't want to go into the sectors, but just end with saying that even before we review development, of course we have to do this business of looking at the budgets, looking at coverage, looking at what is happening, but much more forcefully also asking what is development. Can there really be development when there is no democracy? Let's say they are correct. Let's say every child is in school. Let's say every child is getting their vaccine. But let's say along with that, Muslims are being lynched. That you cannot speak your mind. That somebody in the university classroom, a teacher has to think twice before what they're saying, because you don't know कौन record कर रहा है, कल को क्या viral हो जाएगा और आपकी नौकरी चली जाएगी. अगर वो स्थिति है तो क्या ये डेवलपमेंट है? अगर असमानता बढ़ रहा है, सबकी आमदनी बढ़ रही है लेकिन साथ साथ असमानता बढ़ रहा है, तो क्या वो विकास है? अगर कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको सिस्टमैटिकली बाहर रखा जा रहा है और बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या वो विकास है? मुझे लगता है ये सवाल हमें पूछने की ज़रूरत है कि विकास का समझ क्या है हम लोगों के बीच में. एंड इफ वी आर वर्किंग फॉर डेवलपमेंट, देन व्हाट इज़ दैट डेवलपमेंट दैट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स? So just final conclusion, taking on to again the Vada na Todo. I think the Vada that we are asking should not be broken is not the Vada that a particular political party makes at the time of the election, but it is the promise of the Constitution that we gave ourselves, that of liberty, equality, freedom and justice. उस वादा को ना तोड़े, उसके लिए हम लोग अगर वो नज़रिया रखें तो हम अपने आप को और किस तरह से और मजबूती से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस पर सोचने का भी अर्जेंसी है. आई डोंट थिंक वी कैन कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. वी रियली नीड टू डू इट नाउ. थैंक यू. थैंक यू सो मच दीपा. दीपा ने इंग्लिश हिंदी दोनों में अपनी बात रखी, तो मुझे उसको ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ये वादा हमारे लिए है कॉन्स्टिट्यूशन का वादा. तो वो वादा जो तोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ हम आज खड़े हैं. और इस पर काफ़ी डिटेल में इन्होंने डेवलपमेंट किसको कहते हैं, what is the meaning of development? Is it for the people? Is it can it be achieved without democracy? Can it be achieved with this huge inequality? What is the meaning of development in a democracy? तो ये चीज़ें इन्होंने हमारे सामने रखी. अब मैं डॉक्टर तनवीर फजल को बुलाऊंगी. डॉक्टर तनवीर is a professor at University of Hyderabad and specializes in sociology of nationalisms, community formation and identifications with specific focus on their implications on discourse of rights and entitlements. He has been part of several prestigious academic institutions and was also a research consultant with Prime Minister's High-Level Committee, that is the Sachar Committee. All of you have heard about the Sachar Committee, 2006. So I'll request Dr. Fazal to come and present to you his analysis. Hello, well, good afternoon.
शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और शुक्रिया चेयर फॉर हैविंग मी हियर। बहुत सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। आई थिंक द फर्स्ट स्पीकर itself laid the grounds and quite clearly and explicitly were able to bring out the fundamental questions which we are faced with today and how उसका manifestation क्या है, उसके outcomes क्या हैं, consequences क्या हैं, वो हमारे नज़र के सामने है। Before moving to Hyderabad, I was a faculty at JNU. And in 2019, this report actually marks 2019 as a year of rupture in some sense. So 2019 also, had different kinds of implications for different people. One of the implications was a decision to move from Delhi to Hyderabad. 2019, I believe, and not just 2014, is actually something which we need to see and study very closely, that how within the first session of the parliament itself, some of the major goals which this regime in particular and its ideological forefathers had been dreaming of was realized in the first session itself. And the way in which it was realized was also very interesting. See, the Article 370 of the Constitution is something extremely well protected, And despite it was just overnight. At that time, I was in Srinagar, where overnight it was, just abolished. So, what we are faced with today is quite sort of a challenge. It is right, जो पहले के speakers ने कहा कि unprecedented है, ये इसको हम न इमरजेंसी से इसकी तुलना बहुत लोग करते रहते हैं कि इमरजेंसी में भी ऐसा हुआ था वगैरह वगैरह, और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में लोग कहते हैं कि इधर भी अपॉइंटमेंट हुए थे, उधर भी अपॉइंटमेंट हुए थे, अभी भी हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? पर इट इज़ समथिंग कम्प्लीटली ऑफ अ डिफरेंट नेचर. दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. आई थिंक पीपल इन दिस हॉल ऑफ कोर्स वुड बी क्लियर अबाउट इट, बट वी नीड टू स्पीक अबाउट इट वेरी बोल्डली एंड विदाउट एनी रिग्रेट्स, विदाउट एनी रेटिसेंस, हेजिटेशन, कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ है जिसकी एक ड्रीम जो है हज़ारों साल से लोग देख रहे थे. मैं 1000 साल इसलिए कह रहा हूँ कि इट डजंट कोइंसाइड जस्ट विथ द फॉर्मेशन ऑफ दिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बट इट हैज़ अ लॉन्गर हिस्ट्री, दिस आइडियोलॉजी इटसेल्फ. Well, I am supposed to speak on the idea of basically on the status of the margins in the country. And marginality in itself is a little complex thing to define. Just recently अभी बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, उसको सेंसस नहीं कहा जाता है, टेक्निकली वो कास्ट सर्वे है. और कास्ट सर्वे में what came out was that that interesting, otherwise we all know that there are हिंदुस्तान में जो है एक ओवरलैपिंग है आइडेंटिटी और इनकम लेवल्स और क्लासेस में. तो लोअर कास्ट हैं वो पुअर भी हैं सबसे, वो डिप्राइव भी हैं, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी सबसे कम रिप्रेजेंटेड हैं वगैरह वगैरह. लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग वाज दैट द फिगर विच केम आउट द सर्टन अपर कास्ट ग्रुप्स who a quarter of them at least, and in some cases 1/3 of them, are counted amongst the poor. Now this is an interesting dimension. That is why I say the marginality is little difficult to understand and explain. And in this report itself, we see some of the groups which may historically not have been considered as marginal are now being talked about, like for example children. For instance, the disables, or very soon we will have also people, those who are from the, transgender community, etc. I will say that just for our understanding, we should see that how marginality itself can be separated between what is systemic marginality, जो कि सिस्टम से प्रोड्यूस्ड है.
system itself very skewed हो सकता है, and as a result of which castes, communities, groups, women, etc. may be facing different kinds of consequences of marginal situation. But there is also marginality which is deliberately produced. A marginality which is produced through the actions and inactions of the state. It is not that the systemic marginality has no connection with what state does. But the intentional or the deliberate marginality which I am talking about is something which has gained really currency after the 2014, particularly so after 2019. So one of the first announcements which the Narendra Modi government did after 2014 was they said कि अब हम सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं, इसलिए किसी खास का विकास करने के लिए हमें अब ज़रूरत नहीं है, हम टारगेटेड डेवलपमेंट से दूर हटने. That is not something which we are very comfortable with. This was essentially, I will see it as actually suggesting that there are no communities here who really need special attention. As a result of which you see that this report also shows that allocations for marginal groups such as SCs, STs, and even minorities have been gradually been decreasing from one budget to the other. And therefore, that kind of a attention which was required for their certain kind of developmental questions is deliberately ignored. But more important is, which we need to see, examine, and understand, is the whole idea of violence, and how violence is the instrument through which this marginality is being produced. तो वायलेंस का फंक्शन यही नहीं है सिर्फ कि एज द डेटा शोज कि फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया स्पेंड्स डेटा इज देयर कि जो कास्ट रिलेटेड वायलेंस है उसमें करीब 84% केसेस since 2014 involved of those killed has happened. This is the data from 2010 to 2017, but the same figures, they will also argue that much of these cases have happened after 2014. So from 2014 to 2017, I'm not talking about the last 5-6 years, the 84% cases of killings associated with violence which has taken place because of cow slaughter, cow smuggling, and whatever, all kinds of those accusations. 97% of those have been Muslims. Rest would be, I believe, Dalits and tribals. There is a huge increase in lynching, and lynching particularly of people belonging to marginal communities and especially minorities. The violence, the role which violence has had is not just, to teach those who are considered to be accused of one crime or the other a lesson, but to send a message across the entire community. The fear which is to be instilled overall, this fear is something which is produced and constantly being reproduced, and which ultimately, which I have seen and observed, also has led to, unfortunately, in our public discourse, on a side sort of, silencing. You can say self-censorship as well. I know many public intellectuals who were extremely critical of the state prior to 2014. Post 2014, they're talking about food, hygiene, culture, music, etc., which are also important questions. We all should have relation them as well. But at the same time, politics is the word which they've been very careful of. I'm not talking about everyone. Of course, we are rich. The public discourse is rich with the contribution of many important people. But at the same time, we also see the absence, and you notice them as well. So this, this whole idea of marginality, connection with violence, and violence constantly reproducing fear. Well, as I see, there is a sort of a multiple majoritarianism. India is a very complex country.
इतने सारे nationalities हैं, communities हैं, sociologists, some of the sociologists would say that there is no one society in India, there are multiple societies. So similarly, there are multiple majoritarianisms. You have the Asamiya majoritarianism in Assam, the Meitei majoritarianism in Manipur, and similar kinds of majoritarianism you will find in many places. It is not necessary that you are numerically more, therefore you are a majoritarian, but you also have to have certain kind of ideas associated with it to be so. Now, what we see is, what underlines all these majoritarianisms is this now a new kind of association with the predominant one, which is the Hindutva. So the strong linkages with Assamese nationalism, which emerged with certain kind of a linguistic, chauvinism, but now is more closely associated with a very some variety of the idea of expelling minorities, and has resulted ultimately in the NRC, and nearly 1.9 million people in Assam alone are today facing statelessness. Similarly, the situation in a small state such as Manipur we've seen, and which has been continuing. The violence has not completely been erased in Manipur. It continues, and the tribal populations face the much of it. So this now, when we are many times opposed to this idea of Hindutva, we perhaps ignore its close association with these smaller other majoritarianisms, and therefore we need to be very careful about them, very cautious about them, and wherever they emerge, we do not necessarily need to pander to them, but immediately raise questions which are very important, those are questions which emerge from our idea of democracy itself. And associated with this is now the whole reworking on the idea of citizenship. State-citizen relationship ultimately is what democracy was supposed to build, a robust relationship between state and citizen, a sort of a relationship in which there is a certain amount of accountability as well. But today we see that there is a new idea of citizenship which has emerged, which doesn't draw necessarily from our constitution. It is definitely an idea which has other kinds of influences, some of which was mentioned earlier, the German influence or something like that. तो ये जो new idea of citizen है, इसमें there are classes of citizens. Some are citizens whose, for instance, the loyalty is unchallenged. No one can question it. Even if they do something wrong, it is an individual responsibility and not a collective one. But there are other kind of citizens who have to constantly prove their loyalty in every moment and every occasion. This is not only on the question of loyalty alone, but on variety of situations where you tested, you're supposed to respond accordingly. And as a result, and I'll just close with this last kind of observation. As a result, what we have seen is that our own idea of nation or nationhood is completely being robbed of. At some way or the other, if we to see deep inside us as well, that how do we easily accept a Hindu nationalist discourse as not necessarily an anti-nationalist discourse. A Hindu nationalist discourse is seen, even from the secular nationalists, as something which is deviated, which is not which is mainly probably some reasons of history, etc., has misread or misunderstood the entire thing. But it is not something which is to be rejected altogether, to be ostracized, and to be so
Unlike, say, for example, and here the difference from the German nationalism we see. Today's German nationalism would not adjust with Nazism at all. And in fact, to the extent that it had to support whatever Israel does, which is another problem altogether. So, and as a result, you will see that a Sikh nationalist raising slogan for, some Khalista or something, is easily consumed as a certain kind of terror-associated, Ugravadi or something. But at the same time, the same thing will not be done in the case of, say, a Hindutva activist who raises slogan for Hindu nation. Day in and day out, there are these kinds of statements being made, hate being produced and reproduced, and there is virtually, despite our own discomfort with it, but virtually we will not equate it with something like a, a terror producing idea or a terrorist discourse. We need to actually begin to say that this is not the nation at all. Rather, neither is it a distorted idea of a nation. This is completely altogether a foreign borrowed idea of a nation which we do not associate with. Not only do we not associate with, but we reject it altogether and we see it as a criminal idea. Unless and until the legitimacy of that discourse is really, pushed out and questioned and thoroughly, erased, we will see that some way or the other they keep coming back to us through numbers, coming together of different oppositional parties. We may be able to, and that is important also, I'm not discounting that effort. We may be able to push them out of power, but they still continue to knock from here or there and pop up again and again. So here I'll stop, and that's it. Thank you so much, Dr. Fazal. Dr. Fazal ने marginality के question को, बहुत complex question है, उसको analyze किया और ये point out किया कि एक तरह की marginality सिर्फ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग areas में अलग तरह की marginality हो जाती है. Majoritarianism अलग तरह की होती है, लेकिन वो जो अलग अलग टाइप की majoritarianism है वो हिंदुत्व के मजॉरिटेरियनिज्म को फीड कर रहा है, उनकी लिंकेजेस हैं. तो अगर कोई सोचता है कि मैं एक पार्ट ऑफ कंट्री में मैं बहुत नेशनलिस्टिक हूँ, मेरी मेजॉरिटी को ख़तरा है माइनॉरिटी से, तो उनको ये समझना चाहिए कि वो उस लार्जर नैरेटिव में भी फीड कर रहे हैं, उसको उससे फिर वो अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकते. कई दफ़ा हम देखते हैं कि वो कहते हैं नहीं मैं तो हिंदुस्तान में आई एम अगेंस्ट हिंदुत्व एंड अगेंस्ट हिंदू मजॉरिटेरियनिज्म on the whole, but in my part of the country, we, जैसे आसाम में हुआ है या मणिपुर में हुआ है, और भी कई चीज़ें इन्होंने बताई, काफ़ी हिंदी इंग्लिश मिक्स किया था, so I don't have to explain everything, but ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में भी उन्होंने कहा कि हमें जिस तरह से ये जो डिस्कोर्स है, हिंदू नेशनलिस्ट डिस्कोर्स को क्यों क्वेश्चन नहीं किया जाता है, उसी तरह से जैसे सिख नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, या अगर कोई मुस्लिम तो ऐसा कोई कह नहीं रहे, लेकिन अगर जैसे वो कहते हैं खालिस्तान अलग से हो तो उसको एंटी नेशनल बताया जाता है. लेकिन अगर यहाँ पे हिंदुत्व जो डिस्कोर्स है उसमें कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उसको एंटी नेशनल क्यों नहीं कहा जाता है. तो ये चीज़ हम लोग को रेस करनी पड़ेगी, हमें अपनी लैंग्वेज को भी चेंज करना पड़ेगा कि ये एंटी नेशनल है, ये क्रिमिनल है, ये एंटी ह्यूमन है, ये एंटी इक्वालिटी है. तो इस तरह से हम उनके ही टर्म्स में ना फंसें, हमको बिल्कुल बोल्ड होकर ये बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है उससे तो हमारा जो स्पेस है वो और ज़्यादा कम होता जाएगा और ये इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी. तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करूँगी. हमारे लास्ट स्पीकर हैं अविनाश कुमार, हु इज़ अ सोशल सेक्टर एक्सपर्ट and currently distinguished fellow at the Center for Equity Studies. He has been associated with several notable organizations such as Oxfam, WaterAid and Amnesty International in the past. So Avinash, please come.
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नारायण। और उस परिचय में ये भी जोड़ दूं कि वादा न तोड़ो अभियान के साथ भी जुड़ा रहा हूँ काफ़ी सालों से और उस नाते भी यहाँ हूँ और बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। मेरे ख्याल में हम सब बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हम सबको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, और उसी को नए नए तरीके से रिपोर्ट आप सबके सामने है, कई लोगों ने उसके हाइलाइट्स भी देखी, आप लोग पलट के देख रहे होंगे, डेटा भी देख रहे होंगे, उसको हम फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में तीनों वक्ता जो अब तक हैं रहे हैं, उन तीनों वक्ताओं ने उसको लगभग सिमिलर बहुत सारे की इंसाइट्स के साथ फ्रेम किया है। मैं भी लगभग वही करने वाला हूँ सिर्फ दो तीन चीज़ों के साथ, अभी कुछ घटनाओं के साथ। अभी उत्तरकाशी में क्या चल रहा है, आप में से कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठा दें। क्या हो रहा है? मतलब एक बड़ी घटना हो रही है जिसको लेकर के अब थोड़ी चहल पहल हो रही है अखबारों में। वर्ल्ड कप खत्म हो जाने के बाद 41 मजदूर फंसे हुए हैं, ठीक? हाँ। उत्तरकाशी से पहले जुलाई अगस्त में मनाली में क्या हुआ था, कितने लोगों को याद है? और उसके आसपास हिमाचल में क्या हुआ था, उत्तराखंड में क्या हुआ था, कितने लोगों को याद है? अब थोड़ा हाँ जाहिर है मैं हाथ उठाने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ घटनाओं के पीछे जा रहा हूँ। उसके पीछे 1 साल पहले तकरीबन जोशीमठ में क्या हुआ था या क्या हो रहा था, कितने लोगों को याद है? एक पूरी परंपरा है जो एक आइसोलेटेड घटनाओं के रूप में हमारे सामने आ रही है, और वो हम भूलते जा रहे हैं। हर रोज एक नई घटना एक आइसोलेटेड न्यूज़पेपर क्लिपिंग के रूप में या व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं आपके सामने पेश हो रही है। इन सब के भी बीच जो तरतीब बंधी हुई है और जिस पर बहस ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, उस हर एक क्राइसिस के दौरान, जब मनाली में सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों करोड़ों की संपत्ति खत्म हुई, या उससे पहले जोशीमठ से रातों रात भगदड़ हुई, तो कितने लोगों को काफ़ी बहसें हुई कि क्या हो रहा है, ये क्या विकास का मॉडल है, हम इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए। और 2-4 दिनों के लिए बहस हुई और फिर वो आगे शांतिपूर्वक टनल, उत्तरकाशी में टनल बनने का काम जारी रहा। अच्छा, उसके दूसरे पहलू पर आते हैं। मणिपुर पर 2 साथियों ने बात की, और मणिपुर में क्या हो रहा है हमको बहुत, सबको, अधिकांश को क्या हो रहा था पता होगा। आज अखबारों में हम कितनी बहस देख रहे हैं, कितनी रिपोर्ट देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आज की तारीख में। हमको याद है कि क्या हो रहा है, हमें पता है कि क्या हो रहा है, कि वो मणिपुर ऑलरेडी एक विभाजित राज्य के रूप में एक्चुअली फंक्शन कर रहा है, बॉर्डर्स बने हुए हैं, और उसको पूरी तरह से उस बहस को सार्वजनिक बहस से ख़त्म कर दिया गया है। उस पर बात नहीं हो रही कि हो क्या रहा है वहाँ पर। आर्मी है, वही सरकार है, सैकड़ों, हर थोड़े दिन पे कुछ मर्डर्स और हो जा रहे हैं, डेथ्स और हो रही हैं, किलिंग्स और हो रही हैं, और वो चल रहा है। अब मैं फिर वापस उत्तराखंड पर आऊँगा। पुरोला नाम का शहर आपने सुना है? कितने लोगों को मालूम है पुरोला नाम का शहर उत्तराखंड में होता है? मुझे नहीं पता था जब तक कि वहाँ कुछ हुआ नहीं। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जून 2023 की बात है। इस साल 5 महीने हुए हैं, हम नवंबर में बैठे हैं। वहाँ एक अफवाह के आधार पर अल्टीमेटम जारी किया गया कि सारे मुसलमान शहर छोड़ो, और रातों रात मुसलमानों को पूरे एक शहर से, आप लोगों को अब ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 2 चीजें हो रही हैं, और ये सिर्फ कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि डेवलपमेंट, विकास का जो पैराडाइम है, जिसकी बात प्रोफेसर नंदिता नारायण ने शुरू में की, और दीपा सब लोग यही कह रहे थे कि अब इन सारी घटनाओं से मैं उस गवर्नेंस की बात, शासन की बात और उसकी जवाबदेही, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी की बात पर मैं आना चाहता हूं कि ये जो शासन है, ये कौन सा शासन है, वो किस विकास की अवधारणा में रूटेड है, इसमें जड़ें कहाँ हैं, और उसकी जवाबदेही हम कैसे तय करें। तो मेरे ख्याल में आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि वादा न तोड़ो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो जिस विकास की अवधारणा पे प्रमाइज्ड आज की तारीख में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कर रहा है इंटरप्रेट, उसके भीतर संविधान को, तो बिल्कुल दूसरे तरीके से कर रहा है। जस्टिस लोकर यहाँ है, वो उसमें बात करेंगे, मैं जाहिर है, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ कि विकास की जो अवधारणा। और कल या परसों मैंने आरएसएस के एक बड़े लीडर का एक मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, उन्होंने बड़े
मतलब ऐसे उन्होंने इतनी फराख दिली से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदले जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि उनके संघ के बड़े लीडर हैं, और कल उनका आर्टिकल, कल या परसों ही आर्टिकल आया था, परसों, कि बदले जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ऑलमोस्ट वो इस तरीके से ओन कर रहे हैं कि भाई हम चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके भीतर ही अपने नए मायने निकाल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि नए मायने जो निकाल रहे हैं तो वो क्या नए मायने हैं, और उस पर फिर से थोड़ा सा पिछले 4-5 सालों के रिपोर्ट में हम जाते हैं कि नए मायने ये हैं कि गवर्नेंस, शासन जो होता है, सुचिंतित शासन जिसकी बात हम करते हैं, बेहतरीन शासन और उसकी जवाबदेही, वो जिस विकास की अवधारणा पे आधारित है जिसकी बात की, और वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के भीतर आधारित हो रहा है, उन सबकी परिभाषाएं बदल दी गई हैं, और वो डेटा के माध्यम से भी हुई है और दूसरे तरीकों से भी हो रही हैं, और उसको समझने की जरूरत है कि हम सब जानते हैं कि कैसे हो रही हैं वो हमारे सामने। थोड़ा पीछे जाते हैं, 2019 की बात तनवीर ने की, 2019 वाटरशेड है, और 2019 वाटरशेड है, कैसे कैसे है वाटरशेड। 2019 वाटरशेड 3 तरीके से, 3 सिर्फ इंस्टेंसेस देना चाहता हूँ। सरकार 2019 में आती है मई में, और अगले 4 से 5 महीनों के भीतर 3 बड़ी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? ट्रिपल तलाक, दूसरा क्या होता है, जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट का डिसोल्यूशन, ये इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। तीसरा क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो कि जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये 3 बड़ी चीज़ होती हैं, और उसके साथ साथ चौथी एक चीज़ होती है जो सरकार नहीं करती है, लेकिन बहुत दिलचस्प तरीके से वो उसी रीडिंग में आती है। वो राम जन्मभूमि पर पूरे सुप्रीम कोर्ट के पैनल का एक तरफा 5 कॉन्स्टिट्यूशनल सिटिंग कि सारी की सारी ज़मीन को राम टेम्पल ट्रस्ट को देने का ऐलान। ये एकदम एक के बाद एक चारों चीज़ें एक पूरे एक नए पैराडाइम के साथ। उसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ी कहानी के रूप में कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि कहानी कैसे बदलती है, बदलनी भी जा रही है। उसके तुरंत बाद कोविड आता है, साथ साथ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, और उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा मंत्र देते हैं सबको, आपदा में अवसर। और आपदा में अवसर वो कहते हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस फॉर अस टू एक्चुअली शो आवर रेजिलियंस, वर्क ऑन कोविड एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स वन डेफिनेशन ऑफ इट, वो एक परिभाषा है उसकी। लेकिन दूसरी परिभाषा क्या होती है? उस कोविड-19 का नाम लेकर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक किया जाता है। उसके तहत जो हुआ माइग्रेंट लेबर्स के साथ, इनफॉर्मल सेक्टर लेबर्स के साथ, उसकी कहानी हम सब जानते हैं, वो एक पहलू है। क्या होता है उसके साथ साथ 19-20 साल के यंग लड़के लड़कियों को स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए यूएपीए के अंदर, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उसके साथ साथ इमरजेंसी पावर्स इमीडिएटली इन्वोक होते हैं। उसी के बाद साथ साथ एफसीआरए, जिसकी बात उसी दौरान कोविड के दौरान एफसीआरए और सारे जबरदस्त तरीके से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अटैक शुरू होता है। ये पूरा आपदा में अवसर का एक दूसरा पहलू है कि कैसे एक शांति है, सड़क पर लोग निकल नहीं सकते हैं, प्रोटेस्ट नहीं हो सकते हैं, कैसे आप इस्तेमाल करते हैं उस आपदा में अवसर की नई परिभाषा का। तीसरा क्या होता है? इन्हीं दिनों 2020-21 के दौरान जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, और ये रिपोर्ट्स आपके सामने वाकई, आप सिर्फ डेट्स को देखिएगा, उसी दौरान एनवायरमेंटल लॉज, फॉरेस्ट लॉज, लैंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट, जिसको पहले 2014 के बाद बदलने की कोशिश की गई थी और उसको थ्वार्ट किया जा चुका था, उसमें रिपोर्ट में कहती है कि 80 डिफरेंट नोटिफिकेशंस के माध्यम से कंसेंट क्लॉज हटा दिए जाते हैं, कितनी तरह की चीज़ें, लेबर कोड चेंज कर दिया जाता है। एक पूरा का पूरा 2020-21 के दौरान, जबकि कोविड अपनी पूरी चरम सीमा पर है, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं एक साथ। 2 मॉडल और दोनों एक साथ हो रही हैं। एक मैसिव सिविल सोसाइटी पर क्रैकडाउन, माइनॉरिटीज पर क्रैकडाउन, और दूसरी तरफ ये सारे के सारे डेवलपमेंटल, जिसको जो राइट्स और एक्ट्स जो ऑलरेडी सेफगार्ड्स प्लेस थे, उनका बहुत खुले तौर से, लेकिन किसी को पता भी नहीं चल रहा है, बहस भी नहीं हो रही है कि हम सब कोविड से बचने में जूझ रहे हैं। नैरेटिव क्या बन रहा है? हम लार्ज स्केल उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये एक रिपोर्ट बताती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो इफ एट ऑल कहीं हो रहा है वो हाईवेज और इसका डेवलपमेंट, और उसके पूरी एक ज़बरदस्त भव्य छवि पेश की जाती है कि देखिए हमने कितने हाईवेज बनाए हैं, और ये इतने हाईवेज बनाए हैं, इतने सारे उसकी वजह से कितने ज़बरदस्त कनेक्टिविटी बन रही है, और सारे देश में कनेक्टिविटी तैयार हो रही है। और उसका एक पहलू फिर वापस जाएं तो वो हाईवेज की परिणति जो मनाली में हुई,
जो शिमला में हो रही है, जो उत्तरकाशी में हो रही है, उस पर कोई बहस नहीं चल रही है। लेकिन उसका ये पहलू दिखाया जा रहा है कि देखिए हम कितने ज़बरदस्त तरीके से विकास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों पहलू जो साथ आ रहे हैं, और मणिपुर पे फिर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें फिर क्या हो रहा है, इसके साथ साथ एक तीसरी चीज़ हो रही है, वो है ज़बरदस्त तरीके से, और जिसकी बात भी कही गई है, एक नई हेजेमनी क्रिएट करने का, विचारों की एक नई अवधारणा क्रिएट करने, जो पहले से था कि विकास की अवधारणा है जिसमें चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हम करें, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहें कि सिविल सोसाइटी हमारा अगला फ्रंटियर है जिसको अटैक करना है, हमारे जो अभी के गृह मंत्री हैं वो कहें, सार्वजनिक रूप से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्लेटफॉर्म पर आकर कहें कि हमें ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की परिभाषा बदलनी है। ये पूरा पैराडाइम बदला जा रहा है। तो ये पिछले 4 या 5 सालों का आपका सामने इतिहास है, और वो कैसे हो रहा है, वो उसका एक हिस्सा इस मॉडल पर है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट अथॉरिटेरियन स्टेट, सेंट्रलाइज स्टेट, जिसके नीचे उसको इम्यूलेट करने के लिए होड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, अब उसके बाद होड़ लगी हरियाणा में, कह के उत्तर योगी राज को लेके आइए। कर्नाटक में पहले बहस चल रही थी योगी राज को लेकर आइए, बुलडोजर मध्य प्रदेश में चला, बुलडोजर चलाइए, असम की बात हो चुकी है। तो सब राज्यों में होड़ लगी उस विकास की अवधारणा को अपनाने की, कि ये है कैसे हम कंपीट करें अपनी लॉयल्टी दिखाने की उस विजन को, और कैसे हम कंपीट करें इस सत्ता में अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने की। तो ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं हो रहा है, ये पूरा नीचे तक ये पूरा जा रहा है, स्टेट्स में जा रहा है, और ये लगातार इस तरीके से हो रहा है। तो एक तो ये हिस्सा है हिंदू नेशनलिस्ट अथॉरिटेरियन स्टेट का एक विजन उस पैराडाइम का, और दूसरा हिस्सा है क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिनके लिए सारे लॉज बदले गए, लैंड एक्विजिशन से लेकर सारा कुछ, बैक्ड बाय जितने भी, और हम जानते हैं एनेक्डोटली नहीं, मतलब रिपोर्टेड इंस्टेंसेस जहां पर अगर कोई एक बड़ी कंपनी एयरपोर्ट हैंड ओवर करने से मना कर रही है तो उनको यहाँ 2 दिन बाद उनके यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो रही है वगैरह वगैरह। और उस तरीके से पब्लिक थ्रेटनिंग्स के द्वारा, सिविल सोसाइटी वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिजनेसेस के भीतर सेलेक्ट बिजनेसेस को आप कैसे फेवर कर रहे हैं, और उसके साथ आप एक पूरा एक क्रोनिंग कैपिटलिस्ट ये भी कहते हुए कि हम 2 बिजनेसमैन या 2 बिजनेस फैमिली या 3 या 4 बिजनेस फैमिली को के बेसिस पे एक नए विकास की अवधारणा, वो चाइनीज मॉडल होगा, वो जायबात्सु मॉडल होगा जापान का, वो सिंगापुर मॉडल होगा वगैरह वगैरह, और ये वो पूरी छवि क्रिएट की जा रही है। ये दोनों जो पहलू हैं वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसका पूरा का पूरा प्रतिफलन क्या हो रहा है एक ऐसे विकास की अवधारणा में जहाँ पहले से आपका 90% लेबर इनफॉर्मलाइज था, आप और लोगों को सड़क पर ला रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और इनफॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा कंसेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसी सहमति क्रिएट कर रहे हैं इस विकास के लिए कि हाँ यही विकास की अवधारणा है। तो आज की तारीख में अगर हम गवर्नेंस और गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, जो हमारे सभी वक्ता कह चुके हैं, तो हमें नए तरीके से बहस करनी पड़ेगी कि फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो संविधान के जो मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य, उनके भीतर विकास की अवधारणा को हमको कैसे दोबारा पहल उस मॉडल्स को फिर से वापस लाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके बाद ही हम शासन की लड़ाई लड़ पाएंगे। पहली लड़ाई वो है। शुक्रिया। Thank you so much, Avinash. Avinash has talked about the entire concept of development, that development for whom, and he has given numerous examples how, since he spoke in Hindi, I'll just speak bit in English. He's given examples particularly of Uttarkashi, जो अभी टनल का एपिसोड चल रहा है, and it has been a disaster in the making. Everyone will remember the floods that took, the massive floods that took place, the earthquakes that took place, and how buildings developed cracks in Joshimath. And experts have been warning for years कि ये हो रहा है, यहाँ पे आप चौड़ी सड़कें ना बनाएं, टनल्स ना बनाएं, लेकिन उनको इग्नोर करके ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट की आपने बात की, उन्हीं के कहने पे ये पूरा एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन चल रहा है. वी शुड एडेड द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑल्सो, किस तरह से उसमें संशोधन करके आदिवासियों के हक छीने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मिनरल रिच लैंड है, उसको माइन करना है. एंड अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मणिपुर and even Kashmir, I believe, are related to capture of this forest land.
बाकी आपने जो सारे एग्जाम्पल्स दिए कि 2019 एकदम दिस वाज अ वाटरशेड मोमेंट एंड हाउ वी स्टार्टेड, आई मीन वन आफ्टर द अदर ऑल द थिंग्स विच वर एक्चुअली इन द मैनिफेस्टो, द criminalization of the triple talaq, the 370 removal, and then Citizenship Act, and Ayodhya judgment which came from the Supreme Court. And then वो आपदा में अवसर की बात थी, that how this COVID was used as an opportunity to push through these most anti-democratic and draconian laws. I mean, the laws were empowered, they were weaponized. UAPA was used to imprison dissenters among students, teachers, journalists, and researchers, lawyers. FCRA was used to attack civil society organizations who were, might question the kind of degradation that is taking, which would, in addition to all the other role of the watchdog, would also take on the question of the environmental degradation, land displacement, and so on taking place. The labor code changes, and so on. So he's given all these, and then the bulldozer politics which has come, which I believe now is also borrowed from Israel. I mean, now that we are hearing so much more about what has been happening there, so they seem to be copying many of the things that they're doing in Kashmir and elsewhere in the country from, the kind of politics, the kind of governance that Israel has been following. So I will just like to complete by first of all thanking all the 4 speakers, and then maybe just add a little bit of my own. This business of Apada mein avsar, we experienced it firsthand in our universities. In 2020, when at the height of the second wave, when the focus of the Prime Minister should be, I mean, it was in fact the first wave. Second wave was 2021. But when the entire country should be focused on healthcare and, the vaccine was being developed and that was what should have been our focus, we suddenly heard this announcement that we are going to implement the National Education Policy 2020. तो ये National Education Policy, नई शिक्षा नीति 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक लफ्ज़ में वहाँ पे 1 मई को 2020 को उन्होंने कह दिया था कि इसका हार्ट एंड सोल, इसकी आत्मा जो है वो है ऑनलाइन एजुकेशन. हम लोग जो ऑनलाइन एजुकेशन के डिज़ास्ट्रस इफेक्ट से जूझ रहे थे 2 साल, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं सीख पा रहा था. Even those who had devices, most people had no devices. Most people don't even have electricity. Leave alone, laptops, smartphones, internet connectivity. लेकिन जिनके पास है भी, मैं बहुत एलीट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती हूँ सेंट स्टीवंस में, तो जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं भी और जहाँ पे कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, अगर टीचर को हमेशा मिलती नहीं थी लेकिन मिल जाती है, वहाँ पे आप जो फॉर्मल क्लासरूम इंटरेक्शन, जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, उसको आप एक डिजिटल एक्टिविटी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. तो उसमें ज़्यादातर लोग स्विच ऑफ कर दें, या अगर सुनना भी है तो किस तरह से आप इंगेज करेंगे स्टूडेंट्स को, आप उनकी आँख में आँख भी नहीं मिला सकते. तो इट डज नॉट वर्क, इट डजंट वर्क. एंड एट द एंड ऑफ इट, जो स्टूडेंट्स 2 साल के बाद फिजिकल क्लासरूम में वापस आए, दे हैड लर्नड नथिंग. Barring 6 or 7 students, the bulk of the students had learnt nothing. They were at ground level, zero. And I asked them that, what were you doing all this time? You did so well in all the exams. They said, ma'am, it was an unmonitored exam. We copied. The solutions were put out by these, Kamla Nagar में हमेशा एक industry शुरू हो जाती है जब भी ऐसा कुछ होता है. And these are circulated. As soon as the exam begins, वो solutions circulate करते हैं. All students know this. And their parents know it and we know it. So nobody learned anything in that period. स्कूलों में और भी बुरी हालत थी. There are so many accounts coming out of that. So उसको हार्ट एंड सोल बताना, ये आपदा में अवसर था. एंड क्लियरली विद इन अ वीक ऑफ दैट देयर वर दीज अनाउंसमेंट्स बाय सुंदर पिचाई एंड सो मेनी अदर, रिलायंस, ऑनलाइन एजुकेशन में हम इतना और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. इट्स जस्ट अ बिजनेस वेंचर. इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग मनी एंड ऑल्सो टेकिंग ओवर द इंटेलेक्चुअल sort of control of the intellectual capital of the country, कि आप कंट्रोल करेंगे कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, और किस तरह से क्वेश्चन करेगा या नहीं करेगा किसी चीज़ को. इसमें जो बड़े बड़े पहलू आए हैं, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ. जब शुरू में आई ये पॉलिसी तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी लिखी थी जो हम लोग कहते रहते हैं कि दिस विल प्रमोट रैशनल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी. वेरी नाइस, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट टू दैट. लेकिन जो ठोस उसमें चीज़ें थी, फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिबिलिटी का सवाल जो है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन पॉलिसी की जो बात है, वर्ड रिजर्वेशन इज नॉट यूज्ड एनीवेयर.
एक चैप्टर 14 है, वहाँ पे आप मार्जिनलाइज ग्रुप्स की बात करते हैं, SCDG, लेकिन उसमें आप कहीं भी कहते नहीं हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी फॉर द SC, ST, OBC, PWD. There's nothing, no commitment at all. Moreover, even if you think a commitment होगा, क्योंकि वो तो पहले से पॉलिसी है, which we are seeing in fact being dismantled, then the whole thrust towards privatization and commercialization and increase in fees, everywhere we've seen spurting of fees, जो होना ही है, that will take care of the fact that the marginalized sections will not be able to reach that level at all. और उसके साथ साथ इन्होंने जो changes जो लाए, which we are experiencing first hand, हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब क्रम्बल कर रही हैं. जो CUET फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, वो स्टेट्स के पावर्स को छीन लिया पूरी तरह से, और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया. मेरे क्लासरूम में मुझे एक भी बंगाली, एक भी साउथ इंडियन, एक भी नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट नहीं मिला. आई हैड स्टूडेंट्स इन द नॉन क्रिश्चियन पार्ट ओनली फ्रॉम 3 states, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान. So the diversity factor, which is the most important education for our students, was completely gone. और जब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आए, माइन इज अ क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि अब डाइवर्सिटी आएगी. येस, वी गॉट सम साउथ इंडियंस, बट दे वर नन ऑफ देम वर फ्रॉम बिलो द विंध्याज, इन द सेंस दैट दे वर ऑल सेटल्ड इन दिल्ली एंड इन नॉर्थ इंडिया. They were very comfortable with Hindi, which was surprising for me because I've taught many generations of students, and normally they say Hindi, English, दोनों में बताइए, because we don't understand Hindi. But they were very comfortable, so I asked them how. They said, नहीं ma'am, we've been living in Delhi all our lives. तो जो साउथ से हमारे बच्चे आते थे या और parts of the country से आते थे, वो totally गायब हो गए. तो जो rich mixing of different cultures हमारे यहाँ होता था हमेशा, वो एकदम से ख़त्म हो गया. साथ साथ जो जेंडर रेशो एकदम ख़त्म हो गया. आपके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो टेस्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. देयर स्कूल एजुकेशन इन which is not perfect, but maybe over a period of time they learn how to reason, they learn how to write, their language skills, their logical skills are developed. वो trash हो गया, उसका 0% weightage है, and the whole thing depends on this one exam, this CUET, which is controlled basically by the coaching mafia. And so those who are able to afford expensive coaching, they're able to make it, and the others are all falling by the wayside. इसी के साथ जो नया कोर्स एकदम शुरू किया, 4-year undergraduate program, why 3 to 4 years? No logic is given. Will multiple entry exit program. Multiple entry exit से 2 चीज़ें हुई. एक तो marginalized sections start getting pushed out because you are encouraged to go with some certificate which is of no value in the market. Second, the courses are completely turned on their head, क्योंकि आपका course जो बनता है वो एक certain logic के साथ बनता है कि student will complete 3 years and will then maybe go in for further studies. But now you're catering to the diploma students, the certificate students and the honors courses all at the same time. You deal with them very differently. One shoe size does not fit all. तो अगर हमने सिलेबस को क्वेश्चन किया कि आपने ये चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों डाली, जब उसमें 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हमें बताया गया कि नहीं, कुछ लोग तो छोड़ के चले जाएंगे 1 साल के बाद, तो हमें यहीं पे डालना पड़ेगा. पूरा जो एक सीक्वेंस होता है वो ख़त्म कर दिया गया. सो वी आर नाइदर केटरिंग टू द वंस हु आर गोइंग टू लीव आफ्टर अ ईयर, नॉट टू द वंस हु आर गोइंग टू स्टे. इसका एकेडमिक कंटेंट, फॉर एग्जांपल ऑनर्स कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी में आज इज बिकम नाउ द रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. जो यहाँ पे जो बर्बादी हुई है वो हर जगह रेप्लिकेट की जाएगी. तो हमारे ऑनर्स कोर्स में 75% यूज्ड टू बी एटलीस्ट द मेन सब्जेक्ट, उसको रिड्यूस करके 50% कर दिया है, और आगे प्रपोजल है कि उसको 30% कर दें. बाकी टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे आर वेरी बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. डूइंग व्हाट? They are doing value-added courses, skill development courses, and all kinds of things which are so time-consuming, and they're learning nothing. Those courses are not designed by us. They have peculiar things like, personality development and how to make, it's fine, you learn how to make pastries, but that's not what I'm trained to teach. I must come and teach my mathematics, otherwise what is the use of all my education? So, but we have to teach all those if we have to retain our jobs. Otherwise, we don't have enough workload. We are forced to teach students in 40% less teaching time. How do we manage? We can't do it. Neither students are understanding anything, nor teachers are trying to, are able to convey anything at all. These generations are ruined. Their future education is completely finished.
Governance में भी ये हुआ है. हाँ, the second thing that in courses that has happened is that there is an ABC regulation which is being mandatorily implemented that says that allows a student to pursue 70% of his or her course online from other universities, from something called a MOOCs portal, massive open online courses, which have been a failure in Western countries, but हमारे ऊपर थोपा जा रहा है. So students, if they're going to study 70% of their course online, what is the quality of their degree? How do I guarantee that they've actually learned anything? And the temptation is कि unmonitored online exam में आपको number आ जाएंगे. You choose the easy way out. आपको आना नहीं पड़ेगा college में. Where is going to be the sense of community, the sense of extracurricular activities, and the sense of belonging to an institution, and that human interaction which is absolutely vital. Governance mein inhone, that is the last sort of most unkind cut of all, that they've said the affiliating system has to go. That is written in NEP, come what may. So what does that mean? It means that a university like Delhi University, which has about 80 colleges, each institution is going to be standalone, self-governing institution, nothing to do with the university, and the management body will be called the Board of Governors and be given 100% powers for every single thing. UGC regulations don't matter. UGC itself is going to be soon a thing of the past. आप खुद rules बनाएंगे courses को लेके, admissions को लेके, qualifications of teachers को लेके, selection committees कैसे होंगी, everything A to Z, hire and fire, everything is going to be decided by that Board of Governors. The Board of Governors has no teacher representation either by election or by rotation. It is actually forbidden. There shall be no elected representation in any of these bodies. All democratic spaces are shrunk. So combined with the fact that आपके spaces for dissent वैसे ही कम हो रहे हैं, आपका ये management बिल्कुल all powerful बनाया जा रहा है. These are going to be like 15,000. अभी जितने भी हैं उनको 50,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिड्यूस करके 15,000 किया जा रहा है. स्कूलों में भी रैशनलाइजेशन, मर्जर के नाम पे स्कूलों की तादाद massively कम की जा रही है. So where will people study? For most people they will say online education कर लो क्योंकि वो आपके लिए सस्ता होगा, या कुछ स्किल सीख लो जो आपके बाप दादा करते थे वो ही कर लो. That you are allowed to do even after the age even before the age of 14 now, you're allowed to go into this so-called professional courses, which family occupations and so on. So you perpetuate the caste system, you deprive students of opportunities to actually get that wholesome learning where they'll be able to understand and question society, because that is not what is on your agenda. So इस तरह का जो हम change देख रहे हैं, and our universities are in a very bad shape right now. I have just retired. I'm not happy about retiring because even though the ship is sinking, I don't want to be the one to desert it, but I have to right now. So I just wanted to add my 2 bits to it as far as higher education is concerned. And I thank all of you, the panel once again, and welcome Mr. Madan Lokur, Justice Madan Lokur, who is also from our college. So he will remember the old days, and we'll be very happy to hear him after this. Thank you so much.